मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम कौतुक. बेसिकली हमने नया लेक्चर सीरीज चालू करा है पॉलिटिकल साइंस बुक 2 में, दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी. दैट इज योर सेकंड बुक एंड वी हैव कवर्ड द फर्स्ट चैप्टर इन विच मैंने आपको इस बुक का आउटलाइन दे दिया है, दैट बेसिकली व्हाट दिस बुक विल रिवॉल्व अराउंड एंड व्हाट आर द कंसेप्ट्स दैट विल स्टडी, व्हाट आर द वैल्यूज दैट विल स्टडी एंड व्हाट विल बी आवर वे ऑफ स्टडीइंग इट. राइट, in it there was introduction to political theory, right? Why do we need political theory, practical application of political theory, and many more such aspects. So now let's quickly jump on to your chapter number 2, which is with the title freedom. Now as I have mentioned that we'll be studying freedom, liberty, sovereignty, right, and some concepts of nationalism, the constituents of states, etc. आपका chapter 2 है freedom. Now basically this chapter is trying to evoke your thought process. Now remember this thing कि आपकी political theory जो book है ना वो like just except from the exam, beside the exam point of view, it's basically to evoke your thought process, right? What do you mean by freedom? Now when I hear the word freedom, it basically means एक ब्रॉड आउटलाइन हमारे दिमाग में आता है दैट यू नो फ्रीडम टू मूवमेंट, और जैसे हमने राइट टू लाइफ पढ़ा था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा था, वो सारी चीज़ें जो हमें हमारी विश से, हमारी मर्जी से, हमारे ओपिनियन और हमारी चॉइसेस को फॉलो करने की पावर दे, वो फ्रीडम. और ये फ्रीडम बहुत एसेंशियल है. नाउ द आइडियल ऑफ फ्रीडम, द फर्स्ट हेडिंग्स says that because many communities and many peoples, many groups in the world history have been dominated or enslaved or exploited by powerful groups. This is the basic, the crude understanding of freedom. ज़रूरी नहीं है कि फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल मॉडर्न डेमोक्रेसी से चालू हुई, ये बहुत एसेंशियली बहुत ही पहले का प्रोसेस है. नाउ दिस इज द कॉलोनाइजेशन पीरियड, द ब्रिटिश पीरियड, राइट. अब हमने क्या देखा था कि द कॉलोनीज वेर बेसिकली, एंड एक्सेप्ट बिसाइड द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो देयर वर मेनी अदर एग्जाम्पल्स वेयर डोमिनेशन, एनस्लेवमेंट और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, राइट. People and communities and humans were denied the basic human rights, the basic life with dignity. So this was the reason that why freedom was essential. So the basic principle of freedom is a dignified human life. अब हम जो भी पढ़ेंगे इसके अंदर वो एक dignified human life से पढ़ेंगे. There are 2 examples given in your textbooks. The one is of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, जो आपको आपके English syllabus में भी है, right? Now what is basically the long walk to freedom? It basically throws light on the discrimination, on the slavery system and the inhuman treatment that the Africans were subjected to by the Britishers, right? So that was the darkest period. People were denied basically the freedom to express themselves, the freedom to live their lives with a basic human dignity. The other example is about Mahatma Gandhi and about Aung San Suu Kyi. Now these 2 examples also reflect light about how a person through his own experiences connected, a leader connected to the other people around him and valued and recognized his freedom in correlation with everybody's freedom. So this is how it became a political concept. So this was the introduction of your chapter 2. I'm very slow. Now we'll be moving on very fast after this. If you like this video, please subscribe to Personal Tutors.